Long-term capital gain tax on equities should be made nil in this country. Raghav Chadha recently argued that long-term capital gains tax on equity should be scrapped. On this issue, he makes a strong point. पहले समझते हैं ये होता क्या है. When you buy shares or invest in equity mutual funds and hold them for more than a year, the profit you make is called long-term capital gain. Equity simply means जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उसमें एक स्मॉल ओनरशिप होल्ड करते हैं. लॉन्ग टर्म यहाँ पर 12 मंथ्स के बाद के पीरियड को कंसिडर किया जाता है. The rule is simple. If your total long-term profit in a year is up to 1.25 lakh, there is no tax. If it is more than 1.25 lakh, the tax is charged only on the profit above that amount. Let's understand this with an example. Suppose you bought some shares in 2024 or early 2025, held them for more than a year, and now you sell them in 2026. Imagine your total profit is around 1.5 lakh. As per the rule, 1.5 lakh में से 1.25 tax free, so the remaining 25,000 is taxable at 12.5%, which is 3,125 rupees. So this is the amount you need to pay as a tax on your investment. Why this tax should be reduced or scrapped? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कोई क्विक मनी नहीं होता. इट नीड्स पेशेंस. लोग सालों तक इन्वेस्टेड रहते हैं इवन व्हेन मार्केट्स फॉल. जब ऐसे लॉन्ग टर्म गेन्स पर टैक्स लगता है, इट सेंड्स अ क्लियर मैसेज दैट इवन योर पेशेंस इज टैक्सेबल. बिकॉज ऑफ दिस लोग कई बार इक्विटी की जगह अदर एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं. But equity investment actually helps businesses grow and create jobs. अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग long term investment पर shift करें, then this behavior should be encouraged, not punished. That's why reducing or removing long term capital gains tax on equity makes sense.